हेलो और अस्सलाम वालेकुम। आज के ज़बरदस्त एक्सप्लेनर में खुश आमदीद, जहां हम टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक लंबा और बेहद दिलचस्प सफ़र तय करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर्स की मुख्तलिफ इकसाम अपने साइज़, रफ्तार और ताकत के लिहाज से एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ होते हैं। ये सफ़र हमें दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर मशीनों से लेकर हमारे घरों में मौजूद रोज़मर्रा इस्तेमाल के कंप्यूटर्स तक ले जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे हर मशीन का अपना एक अलग और ख़ास मकसद होता है, जो हमारी इस जदीद दुनिया को चलाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे सुपर कंप्यूटर से, फिर आएंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर्स, वर्कस्टेशन कंप्यूटर्स और आखिर में बात करेंगे पर्सनल कंप्यूटर्स की। चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की। अगर हम उन्हें कंप्यूटिंग की दुनिया के सुपर हीरोज कहें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। सुपर कंप्यूटर का मतलब ही है मैक्सिमम पावर, यानी सबसे ज्यादा ताकत। इनका आम और छोटे मोटे कामों से कोई लेना देना नहीं है। इनका आर्किटेक्चर सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और वो है ऐसी नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल कैलकुलेशंस करना जो आम मशीनों के लिए नामुमकिन है और जिन्हें हल करने में शायद आम कंप्यूटर्स को सदियां लग जाएं। जरा सोचिए, सिर्फ 1 सेकंड और खरब खरब कैलकुलेशंस, है ना हैरत अंगेज। इसी नाकाबिले यकीन स्पीड की वजह से ही हम मौसम की बिल्कुल ठीक पेशेनगोई कर पाते हैं, खलाई तहकीक यानी स्पेस रिसर्च करते हैं और पेचीदा साइंसी सिमुलेशंस चला सकते हैं। सच पूछिए तो इनके बगैर मॉडर्न साइंस की बहुत सी तरक्कियां शायद वहीं रुकी रह जाती। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इनमें इतनी स्पीड आती कहाँ से है? इसका राज छुपा है पैरेलल प्रोसेसिंग में। इसे समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें एक बहुत बड़ी इमारत बनानी है। अगर एक अकेला मजदूर काम करेगा तो सालों लग जाएंगे, लेकिन अगर हजारों मजदूर मिलकर इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों पर एक ही वक्त में काम शुरू कर दें तो इमारत चंद दिनों में खड़ी हो जाएगी, राइट? बिल्कुल यही काम सुपर कंप्यूटर्स करते हैं। वो एक बहुत बड़े टास्क को छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और बेशुमार प्रोसेसर्स एक ही वक्त में मिलकर उन्हें जल्दी से हल कर लेते हैं। खैर, इतनी ताकत मुफ्त में तो नहीं आती, इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फायदा तो जाहिर है कि इंतहाई तेज रफ्तार और बहुत बड़े डेटा की प्रोसेसिंग है, लेकिन लिमिटेशंस क्या हैं? ये बहुत बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग की वजह से इतनी हीट पैदा होती है कि उन्हें ठंडा रखने के लिए पूरे पूरे कमरों और मखसूस कूलिंग सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है, और जाहिर है उन्हें ऑपरेट करने के लिए एक ख़ास तरबियत याफ्ता अमला भी दरकार होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की तरफ। मेन फ्रेम को अगर एक शख्सियत का रूप दिया जाए तो ये किसी दाना बुजुर्ग या एक मजबूत देव के तरह है। ये एक इंतहाई काबिले एतमाद डेटा मैनेजर है, एक ऐसी मशीन जो एक ही वक्त में हजारों यूजर्स और बेहद अहम एप्लीकेशंस को बगैर क्रैश हुए मुसलसल चलाती रहती है। आप इसे एक सुपर लाइब्रेरियन की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे एक एक्सपर्ट लाइब्रेरियन लाखों किताबों को बिल्कुल तरतीब में और बगैर किसी गलती के मुनज़्ज़म रखता है, वैसे ही ये मशीन बड़े इदारों के बेतहाशा और हसास डेटा को टॉप लेवल सिक्योरिटी के साथ संभालती है। आला इस्तेहकाम, 24 घंटे काम करने की सलाहियत। यही वजह है कि दुनिया भर के बड़े बैंक्स और हुकूमती इदारे अपने अहम तरीन ऑपरेशंस के लिए आंख बंद करके मेन फ्रेम्स पर ही भरोसा करते हैं। अगर हम इसका मुवाजना करें तो मेन फ्रेम की शानदार पायदारी और कभी क्रैश ना होने की सलाहियत इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सिक्योरिटी भी बेमिसाल है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सुपर कंप्यूटर्स की तरह काफ़ी महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं और इन्हें हैंडल करने के लिए भी हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है मिनी कंप्यूटर्स। इसे हम कंप्यूटर फैमिली का दरमियाना बच्चा यानी मिडिल सिबलिंग कह सकते हैं। दरमियाना साइज लेकिन बेहतरीन ताकत। ये वर्सेटाइल मशीनें उन बिजनेसेस और रिसर्च लैब्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं जहां आम डेस्कटॉप कंप्यूटर तो काम नहीं आता, लेकिन उन्हें किसी बहुत बड़े मेन फ्रेम की भी ज़रूरत नहीं होती। मिनी कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी खूबी कीमत और कारकर्दगी के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़न है। ये मेन फ्रेम के मुकाबले में सस्ते होते हैं और नेटवर्किंग में कमाल महारत रखते हैं। पर कुदरती सी बात है कि इनमें सुपर कंप्यूटर्स या मेन फ्रेम्स जैसी बेपनाह प्रोसेसिंग पावर और बड़े पैमाने पर डाटा कैपेसिटी नहीं होती। ये इनसे बस एक कदम पीछे होते हैं।
अब हम जिस लेवल पर आ गए हैं वो हैं वर्कस्टेशन कंप्यूटर्स। वर्कस्टेशन का अगर आसान अल्फाज में मतलब बताया जाए तो वो है प्रोफेशनल पावर। ये मशीनें खास तौर पर उन लोगों की पहली पसंद होती हैं जो मुश्किल और टेक्निकल फील्ड से वाबस्ता हैं, जैसे कि आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, 3D मॉडलिंग करने वाले आर्टिस्ट और हाई एंड ग्राफिक डिजाइनर्स। जहां आम कंप्यूटर्स बिल्कुल जवाब दे जाते हैं, वर्कस्टेशंस वहां अपना कमाल दिखाते हैं। और इनके हार्डवेयर को देखकर अंदाजा हो जाता है कि एक डेस्कटॉप साइज में कितनी जबरदस्त ताकत छुपाई जा सकती है। ताकतवर प्रोसेसर्स, बहुत ज्यादा रैम और जदीद ग्राफिक्स कार्ड्स। ये जबरदस्त सेटअप इस बात को यकीनी बनाता है कि पेचीदा प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल उसी दुरुस्तगी और नफासत से मुकम्मल किया जाए जिसकी इन मखसूस सॉफ्टवेयर्स को जरूरत होती है। फवाइद की बात करें तो हाई परफॉर्मेंस, एग्जैक्ट प्रिसिजन और शानदार टीम कनेक्टिविटी इनकी पहचान है। हर किस्म का हेवी सॉफ्टवेयर इन पर मक्खन की तरह चलता है, लेकिन एक सच ये भी है कि इस एडवांस्ड हार्डवेयर की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी ये रेगुलर पर्सनल कंप्यूटर्स के मुकाबले में काफ़ी महंगे आते हैं, जो कि इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन बन जाती है। और अब आखिर में हमारी लिस्ट की सबसे आखिरी पर सबसे मशहूर कैटेगरी, पर्सनल कंप्यूटर्स। हमारा प्यारा और जानी पहचानी पीसी, हमारा अपना ज़ाती डिजिटल मददगार। ये वो मशीन है जिस पर स्कूल का होमवर्क होता है, ऑनलाइन क्लासेस ली जाती हैं और रोज़मर्रा की इंटरनेट ब्राउजिंग की जाती है। ये बिल्कुल इनफरादी इस्तेमाल के लिए ही डिज़ाइन की गई है और अब तो ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है। पीसी की सबसे बड़ी खासियत इसका ऑलराउंडर होना है। ये सब कुछ कर लेता है। पढ़ाई के साथ साथ गेम्स खेलना हो, मूवीज़ देखनी हो, सब मुमकिन है। मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस जैसी आम चीज़ों के साथ इसे इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। ये आराम से एक छोटी सी डेस्क पर फिट हो जाता है और सबसे अच्छी बात, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। इन शॉर्ट, पीसी सस्ते हैं, इस्तेमाल में बहुत आसान हैं और बहुत फ्लेक्सिबल हैं। डेली लाइफ के लिए लाजवाब हैं। लेकिन हमें ये फैक्ट याद रखना चाहिए कि इनका आर्किटेक्चर बहुत हैवी प्रोफेशनल टास्क्स या बड़े डेटा लोड्स को संभालने के लिए नहीं बना। इनसे आप सुपर कंप्यूटर वाला काम कतई तौर पर नहीं ले सकते। तो अहम बात यह है कि अब इस सारे सफ़र का एक फाइनल रिव्यू लिया जाए। इस समरी टेबल से चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं। इंतखाब हमेशा ज़रूरत पर ही मुनहसर होता है। सुपर कंप्यूटर्स रिसर्च और बड़ी सिमुलेशंस के लिए हैं, मेन फ्रेम्स बैंकिंग और बड़े डेटा के लिए, मिनी कंप्यूटर्स दरमियाने दर्जे के बिजनेस के लिए, वर्कस्टेशंस प्रोफेशनल और टेक्निकल कामों के लिए और पीसी हमारे अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए। दुरुस्त मशीन का इंतखाब हमेशा इसी बात पर होगा कि दरअसल काम कितना और कैसा है। आज की इस एक्सप्लेनर में हमने कंप्यूटिंग की इस बेहद वसी स्पेक्ट्रम को देखा कि कैसे ये मशीनें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन जाने से पहले एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, तो सोचिए कि कंप्यूटिंग पावर की अगली सतह यानी नेक्स्ट लेवल कैसा होगा, और आगे चलकर इंसानियत की बका और तरक्की के लिए इनमें से कौन सी मशीन सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगी। इस बारे में ज़रूर गौर कीजिएगा। आज की इस तफसीली वजाहत में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। Welcome everyone to today's explainer. We've got a fascinating, epic saga for you today. It's literally the dramatic story of how computing power evolved and completely shaped our modern world. We're talking about a journey from these colossal room-sized titans that helped conquer space, all the way down to the friendly little devices sitting on our desks right now. We're going to meet the 5 key members of this digital family, understand their unique superpowers, and see how they each play an absolutely critical role in human progress. So, here's our roadmap for the drama. We'll be scaling down through history and capability. We're starting massive with supercomputers and mainframes, stepping down to mini computers and workstations, and finally arriving at personal computers. Let's dive in and find out exactly which machine was built for which mission. First up in the family tree, we have the supercomputer. This is the superhero of the group. I mean, this is the absolute titan of our story, built to tackle the most impossible, computationally heavy challenges known to humanity. Get this. A supercomputer can perform over 1 trillion calculations in a single second. 1 trillion. So, whether scientists need to forecast a deadly global weather event, safely simulate a nuclear reaction, or perfectly calculate the trajectory for a deep space mission, they definitely don't use a regular desktop. No way. They call in the superhero. Now, you might be wondering, how on earth do they achieve that kind of mind-bending speed? Well, the secret sauce is something called parallel processing.
Instead of looking at a massive problem and solving it step by step like you or I would, the supercomputer divides that huge task into thousands of tiny pieces. It's kind of like having an entire army of brilliantly coordinated helpers attacking a huge job at the exact same time. So a problem that would take a normal computer literally decades to figure out, yeah, it's solved almost instantly. But every superhero carries a heavy burden. The dramatic cost of this raw power is just immense. Sure, you get unparalleled speed and massive data processing, but these machines are astronomically expensive. Plus, they run so incredibly hot that they require entire rooms dedicated just to specialized cooling systems, and you can't just plug it in and hit the power button. They need a whole team of highly trained scientific staff just to keep them from melting down on their own power. Which brings up a really pivotal question in our digital saga. What if you aren't trying to simulate the birth of a galaxy? What if you just need to safely and securely manage the daily records of millions of bank accounts across the globe? You don't really need a superhero for that, right? That's where the next family member comes in, the mainframe. Think of this one as the wise elder. If the supercomputer is the flashy hero saving the world, the mainframe is the wise elder standing guard quietly in the background. It acts like a tireless super librarian. It can handle thousands of users at once, and it's designed to run 24/7 without ever crashing. When you swipe your credit card, or when a government processes national tax records, it's a mainframe in the background, keeping that sensitive data incredibly secure and perfectly organized. But once again, we face a bit of a trade-off. With mainframes, you get ultimate reliability and ironclad security. That's exactly why the world's financial systems completely depend on them. But they're still very costly, they still take up a massive amount of physical space, and you absolutely need skilled IT professionals to keep them running smoothly. So as the decades passed in our tech drama, a new conflict emerged. Businesses and research labs were growing rapidly. They desperately needed computing power, but they certainly couldn't afford to build a giant climate-controlled room just for a mainframe. So what was the solution? Enter the mini computer, the classic middle sibling of the digital family. Now don't let the word mini fool you. This was no tiny toy. As the middle sibling, it packed significantly more punch than anything an average person would own, and it completely mastered the art of networking in a business setting. Suddenly, a medium-sized company or a university lab could finally afford to process serious numbers and share information across different terminals. It really unlocked a whole new era of workplace collaboration. They really found the perfect sweet spot. They were much more affordable than mainframes, incredibly versatile, and network-ready out of the box. The only real con? Well, they simply couldn't lift as much data weight as their larger, older sibling. But honestly, they were the perfect compromise for a growing modern business. But the drama of computing wasn't just about massive businesses and scientific labs. What about the brilliant individual? What happens when a single engineer wants to design a jet engine, or an architect wants to render a complex 3D building, and they need intense power right at their own desk? That brings us to the workstation, the highly specialized professional of the group. This machine is fiercely capable. To guarantee absolute precision and accuracy, a workstation is completely loaded up. We're talking a top-tier powerful processor, massive amounts of extra RAM, and a highly advanced graphics card. It is custom-built from the ground up to run specialized software. So for things like heavy 3D modeling, complex engineering, and high-end video rendering, it handles the intense pressure without ever lagging or crashing. The trade-off here? It's strictly financial. You're getting high performance, extreme precision, and the ability to seamlessly run professional applications. But because it uses all those elite, premium parts, the price tag is dramatically higher than a standard everyday computer. It's a serious investment for a specialist. All right, so now for the final act of our digital saga. We've conquered space with the superhero, we've secured global wealth with the wise elder, revolutionized the office, and empowered the solo engineer. But what about us? What about our everyday lives, our homework, our entertainment? That is exactly where the personal computer comes in, the friendly digital helper. This is the accessible machine designed specifically for you and me. The PC is the ultimate jack of all trades. It perfectly balances productivity, creativity, and entertainment in one highly accessible package. You can use it to type up a document in the morning, browse the internet for a recipe in the afternoon, and play a game or stream a movie at night. It just does it all. Its greatest triumphs are absolutely its affordability, its flexibility, and just how incredibly easy it is to use. The only limitation?
Well, it just doesn't have the muscle for the heavy lifting. I mean, don't expect it to simulate a global weather system or render a Hollywood blockbuster like its bigger family members can. But for our daily lives, it is absolutely perfect. So let's do a quick recap of our entire digital family. When we put them all side by side, the drama of this evolution really makes sense. If you're doing advanced scientific research and simulations, you need the superhero, the supercomputer. For massive banking and large data, you trust the wise elder, the mainframe. Medium businesses lean on the mini-computer. Intense professional design tasks demand the workstation. And for your daily, everyday use, the personal computer is your best friend. Every single tool has its specific, vital purpose in building our modern world. As the quote here wisely points out, you must always, always understand your own requirements before choosing your technology. Don't just buy power for the sake of power. Choose the exact right digital family member for your specific mission. Thank you so much for joining me on today's Explainer. Keep learning, keep questioning, and I'll see you next time. Welcome back, students. By the end of this video, you will know your exact comprehension level of Chapter 2, and you will have a clear, immediate next step for your studies. To get started, recreate the setup you see here. Grab a piece of paper and a pen, number your page from 1 to 10, and add a final line at the bottom for a bonus question. Here is how this works. I will present a question, and a visual timer will count down. When time is up, pause the video, write down your guess, and then unpause to see the correct answer revealed. Treating this as an active test, rather than a passive lecture, is the only reliable way to build a solid mental framework of how computers are classified. Let's begin. We will start our assessment at the absolute top tier of computing power. Question 1. Which is the superhero of computers? Pause now. The answer is C, supercomputer. Question 2. What are they used for? Pause now. Answer B, weather forecasting and scientific research. Question 3. What is parallel processing? Pause now. Answer C. A big task divided into smaller tasks and solved at the same time. Instead of relying on one processor, the task is fractured into dozens of smaller pieces and solved simultaneously by multiple processors working together. Now for the bonus question. Which computer requires special cooling systems because it produces a lot of heat? Pause now. The correct answer is D, supercomputer. Supercomputers are defined entirely by their ability to fracture the planet's massive problems into simultaneous tasks. That process is computationally intense and generates staggering amounts of heat, requiring dedicated cooling infrastructure. Let's step away from global scientific research and move down the scale into the daily infrastructure of large-scale organizations. Question 4. Which computer is used in banks? Pause now. Answer B, Mainframe Computer. Question 5. Mainframes are famous for what? Pause now. Answer B, reliability, security, and data management. Question 6. Where is a mini-computer on the power scale? Pause now. Answer B, smaller than a mainframe, but more powerful than a PC. These enterprise-level computers do not compete with supercomputers on raw processing speed. Instead, they prioritize absolute security and the reliable flow of data for thousands of simultaneous users worldwide. Now we transition to our final category, machines built specifically for single users and specialized tasks. Question 7. Which computer is best for graphic design, engineering, and 3D modeling? Pause now. Answer A, workstation. Question 8. A workstation usually has which hardware configuration? Pause now. Answer B, powerful processor, more RAM, and advanced graphics card. This split-screen comparison shows exactly why workstations require those components. A standard machine easily handles the lightweight text document on the left. But rendering the complex 3D wireframe on the right requires vastly superior processing power and memory to run smoothly. Question 9. Which computer is best for basic homework, browsing, emails, and entertainment? Pause now. The correct answer is C, personal computer. We have reached the ultimate challenge of this assessment, placing all the systems we've covered in absolute order of power. Question 10. Which is the correct order from normal daily use to maximum computing power? Pause now. The correct answer is B.
Let's map that framework onto this pyramid. We start with the PC at the base, move up to the workstation for heavy design, the mini computer for mid-size organizations, the mainframe for large banks, and crown it with the supercomputer at the peak. Mastering this specific technological hierarchy is what allows you to accurately assign the right computing tool to the exact right human problem. That concludes the test. Take a moment to tally up your total correct answers out of the 10 core questions. Here is your diagnostic grading rubric. If you scored an 8, 9, or 10, excellent work. You have mastered this chapter, and you are ready to proceed to Chapter 3. If your score is between 5 and 7, you have a solid grasp, but you need to revise your notes once more before moving on. And if you scored less than 5, clear your page and re-watch the lecture to rebuild your foundation. Congratulations on completing this self-diagnosis. You now know exactly where your skills stand, and you have your immediate next step. Keep up the good work.